We are live on YouTube as well as we are live on Zoom. Before I start my session out, just wanted to check whether my audio and video is clear. YouTube की जनता चेक पे बताइए कि whether my audio and video is clear or not. Zoom की जनता आप भी बता दीजिए whether my audio and video is clear or not. जल्दी जल्दी बताइए यार, जल्दी जल्दी. राइट, जूम की जनता बता दो यार. राइट, यूट्यूब की जनता आपका वेट कर रहे हैं. गिव मी एक्सटर्नल कंफर्मेशन SA 505. संस्कार जी बड़े टेंशन में दिख रहे हैं. क्या हुआ संस्कार जी? नमस्ते कर दीजिए, ऐसे ना करिए, हल्की सी मुस्कान रखिए चेहरे पे. राइट, क्या बात है. चलो, ग्रेट ग्रेट. So great, guys. Really happy to see all of you joining in. Those who are watching this session for the first time, I would request you to just go to my YouTube channel, live sections. We have conducted a lot of videos out, which is going to be helping you to understand about a different domain. Yesterday, we had a very power packed session on management consulting, right? I am assuming that few of you might have joined it. If you have not joined it out, no worries. The session is also uploaded on my YouTube channel. राइट ट्विंकल जी, अगर आपका मिस हो गया है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जाइए यूट्यूब पे, अरे कर दो भाई सब्सक्राइब और देख लीजिएगा. ठीक है, चलो ग्रेट गाइस. बिफोर आई स्टार्ट इन द फर्स्ट ग्राउंड रूल फॉर दिस सेशन आउट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू प्लीज ब्रिंग अ पेन एंड पेपर. फटाफट जाइए, मानसी जी पेन पेपर लेके आइए. आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस विल बी जॉटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेशन. ओके ग्रेट. अवेटेड सेशन. अंजलि जी कह रही है काफी टाइम से सेशन के लिए वेट कर रही थी. ओके जी, ओके ग्रेट. So now let us start with one of the very interesting area and a domain which is gonna be helping us understand which domain I should start my career into. Now I refer to the word career instead of saying a job. Now please understand there's a bit differentiation between two things, job and a career. Job is something which you do for a money and career is something which you do out of a passion. सुरभि जी कह रही है देखिए सर हमें तो पैसा कमाना है बट उस डोमेन में कमाना है जहां मुझे इंटरेस्ट है, तब जाके मजा आएगा. राइट, so that is a goal which every person is going to be carrying. So very very important for us to understand the domain. Right, few people will say that कि जहां ज्यादा पैसा है that is what my domain is. No bro, right, please understand you need to develop an expertise into one particular domain or two particular domain which is there, and definitely you can grow into that domain. Now let us start with a very basic stuff, guys. You can make some notes parallelly, right? Which is going to be helping you out to understand the things in a better way. I'll share one very detailed chart which will help you understand the things in a better way. The first and foremost thing, if I talk about a career pathway is divided into the first basic primary need and the first basic thing, which is called as the CA core services. Since we are a chartered accountants, we are going to be offering some of the professional services. The major services which are going to be offered exclusively by chartered accountants are first your favorite guide, auditing, जो आपने आर्टिकलशिप में भर भर के किया होगा, right? Of course, many of you might have worked into an auditing domain. But yes, since once you're going to be qualified, your things are going to be changing for you. The funneling is going to be getting bigger. So again, dividing auditing into the two major funnels. First is the statutory audit. Second is internal and forensic audit, which is there. Okay. Just wanted to know out of curiosity in the chat itself, how many of you have worked in a statutory audit domain? कितने लोगों ने stat audit में काम किया? जरा chat पे लिखिए. If you have done, just write yes. If you have not done it out, no problem. Okay sir, okay. मैंने काम किया है सर, मैंने काम किया है. काफी लोगों ने काम किया है. Bang on, nothing like it. Now, let me go in a very detailed manner. Please understand whatever work you might have done in a stat audit will be far more different than what work you're going to be doing in the global big four or a bigger firms which are there. Right? You might have done it, but let us understand what type of work which are going to be happening in the stat audit domain. Now, first of all, every stat audit nowadays is divided into two types of regions. First, there are a lot of global firms coming into an India market which are doing it pure outsourcing work, which are minting the money. That means how they are minting the money. They are billing in dollars, they are billing in dirhams, and they are earning in, they are spending in rupees. So income dirhams में है, income dollars में है, spending rupees में है. मतलब क्या? EY US firm is going to be opening up their leg in India by name called as EY GDS. Similarly, Deloitte have their US leg in India called as Deloitte USI. RSM also have their one of the leg in RSM USI is there, right? Then you have GT Indus is there, right? Then you have BDO Rice, which is there. Then you have PwC SDC, which is there. KGS is there. KGS is KPMG Global Services. So these are the global leg of all the big four firms which are there in India. Now, let me be very honest here. Huge vacancies are there in the global firms as compared to the Indian firms.
So many of the chartered accountants of the previous batch of May 24 qualified batch are placed in the global firms. Reason being, the vacancy is huge enough. Market is very big for a global market. Now, one big problem here in a global market versus Indian market. Global market means you're sitting in India and doing an audit of a client called as a Meta or a Facebook, right? So the biggest problem here is you will not or you might not get that level of exposure which you could get in an Indian firm. The reason being you will not get a chance to visit a client place. आपको यहीं पे बैठ के करना है. You might not get a chance to audit a significant account. That might be a big challenge. What is significant account? An account which is a material and there are other parameters which is there. तो ऐसा account जो important है material है, I might not get to audit it out. ठीक है, but it's again depend on what type of entity, what type of location you're plotted into. So start audit with two divisions I'm doing, Indian and global. Now, after this is done, once you're plotted in, say, for example, I got plotted in Deloitte, India, right? Or I got plotted in EY. Now, the next division generally done by those big fours or top firms are further into three parts. First is TMT, IIC, and FS. I don't know many of you know this out or not. What they do, they divide their firms into sectors. जैसे कि what is TMT? TMT is pure telecommunication, media, and technology. So they will plot you under a TMT vertical. Right? What is IIC? IIC is infrastructure, industrial, and consumer, and FS is financial services, or many of the firms might call it as a BFSI, right? Which is banking, financial services, and insurance. Now, why this is very important and relevant for you, Payalji, just listen it out carefully. So, say for example, if you're plotted in FS, so you're mainly working into service sector. You're not working into manufacturing sector. So your career and profile will be built into the FS sector itself. Now, please understand why it is important for me. Mansi ji, the reason is we are going to be building a specialization into this. Gone are the days when you say that कि मुझे सब करना है. I hope you're getting it. You cannot do everything after you qualified. If you're doing a practice, you have to do everything out. But when you're doing a job and when you're focusing for your career, you need to be specialization of one thing, and then only you can earn and build some good money out. Right? ऐसा नहीं है कि कोई CA final की faculty हर subject पढ़ा रही है. Right? Exceptions are there, but yes. So what I'm trying to say about is you need to build out a specialization into a domain, and domain में other further sub specialization is the subdomain which is there, which has started happening in the market. So you should know how does this thing work. Okay, sir, I'm now getting a clarity. Start audit में further divisions है. Right? If you like insurance sector, FS is a domain or FS is a sector, we can build your career into a start audit. Now let us talk about the process, what you're going to be doing in a start audit. Right. Generally, if I ask you, let me trouble few of you guys, since you guys have qualified chartered accountants. That is what I'm assuming. अब फाइनल दे दिया मतलब सीए बन गए यार. ठीक है. तो कुछ दिनों की बात है, कुछ समय की बात है. राइट. जब वो भी हमें सीए कहेंगे और हम भी उन्हें कहेंगे, बताइए क्या काम है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. वर्मा जी बताइए. राइट. वर्मा जी बोले हमको फंसा रहे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. Right. If I ask you what is the process of a start audit, right? If I ask you what is the process of a start audit, अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप कैंडिडेट हो, मैंने आपको पूछा बताओ कैसे करोगे स्टार्ट ऑडिट, तो इफ यू कुड टेल मी आउट. तो सबसे पहले प्लानिंग होती है अपनी टीम के साथ बैठ करके ऑडिट के लिए. आई ओके, एम रियली सॉरी बट मैं इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ. कोई तो बात नहीं. हाँ हम भी देसी आदमी हैं भाई, बोलिए. ठीक जी. है, बोलिए तो बोलिए. हाँ. हाँ तो प्लानिंग करेंगे देन फिर अपनी जो टीम है उनके साथ में सबके साथ में प्लानिंग किया और फिर जो हमारे प्रोसीजर्स है हमने प्रोसीजर नोट डाउन किए कि हमको इस तरीके से अपने प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं हम्म, एंड उनको सब परफॉर्म करेंगे. बस हो गया, ऐसे ऑडिट करेंगे. ठीक है, चलो बताइए. तो व्हाट ऑल थिंग्स यू विल डू इन अ प्लानिंग. प्लानिंग के अंदर सर मटेरियलिटी और जैसे कि ओके. अगर हमने जैसे ऑडिट में पढ़ा भी है तो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अगर कोई नया एरिया है तो ओके, अंडरस्टैंडिंग. हाउ डू यू कैलकुलेट अ मटेरियलिटी. नो आइडिया अभी थोड़ा मतलब ब्रशअप करना पड़ेगा उस टॉपिक को. ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम. आई एम नॉट ग्रिलिंग आउट, आई एम जस्ट ट्रबलिंग आउट विद अ वेरी सिंपल थिंग आउट. जस्ट वांटेड टू टेल यू आउट गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड. है ना, इंटरव्यू में एबीसी एनालिसिस नहीं चलता. इंटरव्यू में दे वांट मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर. ठीक है, वी आर ओके विथ हिंदी टू सम एक्सटेंट, बट प्रेफरेबली इंग्लिश इज रिकमेंडेड व्हेन यू आर सेटिंग एन इंटरव्यू. तो दैट इज वन थिंग. बट ठीक है, अगर तुम हिंदी भी बोलते ना मेरे सामने, आई एम इंटरव्यूअर, बट इफ यू आर गुड एट टेक्निकल, आई एम हैप्पी टू हायर यू. Right? But the problem again comes here in twofold. Number one, I talked about a global firm. Now, please understand, global firm, you're interacting with a US client. Will I prefer a candidate who's speaking in Hindi? No. The reason is you need to interact with the client in US, UK, right? Canada.
So again, that is a very big problem out. And now to solve this problem, Deloitte USI conducts a Versant test. What is a Versant test? English communication test conduct होती है Deloitte USI की. KGSS, KPMG Global Services, they will also conduct a AMCAT test. Neha ji, what is AMCAT test? It's again a Versant test or English communication test. So all these global firms and companies are now coming out with this type of test so that they can ensure that the candidates are good at English communication, right? Now again coming back to the process, because stat audit बड़ा ही simple है, it divided into the 5-step processes, right? 5-step process which is very very important, which you should know. The first step of a stat audit is a pre-planning, right? What does pre-planning means? देखो यार बड़ा ही simple है. Whenever you're gonna be getting a client, जब भी मेरे पास client है, imagine that I am the auditor and Reliance comes to me, right? So what all things I'll do? I'll check a background of a client. Say for example, right? Let's take a case of a hot case of a Adani. Right now, Adani comes to me today saying that यार शिवम भाई पुराने auditor ने resign कर दिया है, please become my auditor. Will you accept that client like this only? क्या मैं उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूंगा, बोले यार अदानी है ले लेता हूँ? नो, राइट? व्हाट आई डू, आई चेक द बैकग्राउंड ऑफ अ क्लाइंट, आई फिल आउट द क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्म, आई अंडरस्टैंड द एंटिटी, बेसिकली थोड़ा बहुत समझेंगे. प्लस यू विल आल्सो सेंड अ नेगेटिव कंफर्मेशन टू द प्रीडिसेसर ऑडिटर कि कोई दिक्कत तो नहीं है, व्हाट ऑल थिंग्स हैज हैपेंड, वेदर यू हैव गॉट द पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्री प्लानिंग, right? Then it comes to a planning stage, right? Where you're going to be understanding the financial statements, you're calculating a materiality, you're mapping the significant accounts which are there. But definitely, all these steps, again, I can explain you out in a very detailed manner, for which separately I've explained it in my Stat Audit Masterclass, or you can just find out a very detailed session on pre-planning or planning, which is uploaded on my YouTube channel at a separate playlist of a Stat Audit. ठीक है. Then you will do risk assessment. आपने पढ़ा होगा IFC testing, control testing. You need to check, right, which is a part of a risk assessment. Then pure number crunching is a substantive and testing. And the last is conclusion, where you give your audit report and you give your opinion, right? So that are the 5 major steps of a stat audit. Please remember, the steps are supposed to be told in an interview in this steps in this way only, right? So that is something I would recommend. If you want to read it out in a very detailed manner, Verma ji, what you can do, right? You can go to my website, click on the free resources. There will get a detailed reading material of, I think, around 124 pages, stat audit reading material, right? Uske baad se most of the things does not come in an interview. So you can refer that out in my website, which is on stat audit reading material. I'll just show it to you. अगर किसी को ये डिटेल में पढ़ना होगा तो what you can do, you can very simply go to my website cmong.com, click on more section. Here you will find out a free downloadable resources. The detailed reading material for stat audit is uploaded here, right? ये आप download कर सकते हो, which might help you out to read in a detailed manner. Okay, sir. So this is what a typical stat audit is, right? आपने पहले धंधा समझा, processes समझी, controls देखे और audit किया और फिर अपना opinion दिया. That is what is going to be going in a stat audit. Now let us talk about the exposure or areas visually you are going to be getting it when you're working here. Say for example, Verma ji have chosen his career pathway ki bro, I want to get into stat audit. So majorly you will get an exposure of Indies, right? Because nowadays a lot of clients are working on Indies. You will get an exposure of tax audit. Mostly Big Four team are going to be doing a stat audit. मतलब tax audit team, stat audit team only does a tax audit, so that is there. Third, you will do an end-to-end control testing, right, which is a part of IFC. Pure audit of a balance sheet and P&L items, and some of the other compliance related work you will be responsible to do when you're a part of a stat audit team. तो ये exposure मिलेगा. Now you must have heard that in a market saying that की stat audit will give you the highest amount of exit. The reason being same. Number one, since you already done an IFC, so you can easily move to internal audit from here. Since you have a knowledge of Indies, so you can move to the FAST team, which is a pure Indies related domain, which every Big Four offers. Right? Since you have a bit of a knowledge of a compliance and tax, so you have a bit of a leverage in taxation, but generally they won't prefer much into taxation, but thoda bahut knowledge hai. Plus, you have a very good knowledge of audit of balance sheet and financial statements, so that you can move to finance domain and FP&A domain from here, right? Which is more of number crunching ka aapko knowledge hai. So this is how the exit options are a bit higher in stat audit as compared to other domains. So this is why people prefer joining a stat audit as an initial phase of a career. That is what it is. Okay. So this was a basic of a stat audit. Next, very interesting and a growing domain these days, which is internal audit and forensic audit. Few of you might have done it, few of you might not have done it. Let's see and understand in internal audit in detail. If you ask me, sir, what is an internal audit? Dekho, internal audit, I define it out in a very, very simple manner. राइट? मेरे लिए इंटरनल ऑडिट 3 चीजें हैं.
What is internal audit? Number one, it talks about what is process, right? Internal audit हमेशा बात करेगा what is process. Second, it talks about what are the risk involved in the process. What are the risk involved in the process? And third, risk क्या है? Third, what are the controls addressing those risks? सबसे पहले देखा process क्या है. Second is what are the risk involved in the process, and third, what are the controls addressing those risks? Well, let me take a very simple example. ठीक है, बहुत आसान सा एग्जांपल लेता हूँ विच इज रिलेटेड टू Amazon, राइट? नेहा जी ने मान लो आफ्टर बिकमिंग अ सीए, नेहा जी ने अपने दोस्त से, दोस्ती बोलता हूँ चलो ठीक है ना, उसको कहा कि प्लीज गिफ्ट मी समथिंग, तो उसने कहा ठीक है, आई गिफ्ट यू एन आईफोन, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड, प्लीज अंडरस्टैंड, मेनी ऑफ यू हैव ऑर्डर्ड आईफोन और मेनी ऑफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं ना कहीं से ऑर्डर किया होगा. So as and when you place an order, you get a confirmation that your order has been placed successfully. Yes. As and when the order is received by Amazon, that is going to be processed to the supplier. Supplier is going to be delivering the phone. एक process बना हुआ है. सर एक process है कि नहीं है? हाँ जी सर एक process है. Okay. Now, what can be the risk involved in this process? Process हो सकता है, say for example, Neha ji have ordered an iPhone or Neha ji got an iPhone from Amazon, but when she opened that iPhone, iPhone की जगह she got a साबुन की टिक्की, एक ग्रीन बार मिल गया उनको. सुना है आपने काफी सारी चीजें, राइट? शी माइट नॉट हैव गॉट एन आईफोन व्हेन शी ऑर्डर्ड इट आउट, राइट? सेकंड, व्हाट हैपेंड, डिलीवरी बॉय को शी ऑप्टेड फॉर द कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवरी बॉय टुक अ कैश एंड रन अवे. काफी बार आपने पहले डिलीवरी बॉय के पास ये कैश ऑन डिलीवरी किया होगा, तो ऐसे सब रिस्क है. So there are a lot of risk involved in the process. Yes, sir. Now, since you being an internal auditor, you need to see and monitor कि are there controls which are going to be stopping those risks? क्या controls है उस risk को कम करने के लिए? राइट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ प्योर ऑप्स प्रोसेस. जिन्होंने कल का सेशन ज्वाइन किया था उन्हें समझ में आ रहा होगा व्हाट ऑप्स प्रोसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? अब इसमें क्या कंट्रोल डाल सकते हैं? तो Amazon ने बोला कि वी विल नाउ डू अ ओपन बॉक्स डिलीवरी. अरे पता है कि नहीं है, नाउडेज किसी ने ऑर्डर किया है रिसेंटली आईफोन या कुछ लैपटॉप? आजकल क्या होता है, ओपन बॉक्स डिलीवरी. ईशा जी कह रही है व्हाट इज ओपन बॉक्स? सर कुछ नहीं, आपका Amazon बॉय आएगा, अभी वो बोलेगा इल्ले, आप अभी खोल के चेक कीजिए कि बॉक्स में आईफोन है या क्या है. I hope you're getting it. So what they have done, they have implemented a proper control to reduce those risks. Who have suggested this type of controls? Are you have suggested it? Who are you? You are an internal auditor. ऐसे काफी सारे processes which are there, which are purely related to the finance, which are purely related to the organization, right? Which you will help to ensure that the organization works in a better way. Now, the main role of an internal auditor is what? The first major role is to understanding the entities, right? Then they will see what all processes are there, what all things are happening in the organization, and they will give a suggestion. सर थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बताएंगे तो मजा आ जाएगा. चलिए चलिए हम चलते हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में. मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इन योर लाइफ. देखा है, नहीं देखा है? देखा देखा है. चलो जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए. So whenever you are going to be preparing an internal audit report, there is a risk grading which is going to be happening in, right? Three different colors are generally used, right? Green, yellow, and matlab red. Again, then you define a materiality based on some benchmark. We need to define some benchmark. Aditi ji, favorite interview question: how do you decide a benchmark? Right? इस पे भी काफी बार सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं कि बेंचमार्क कैसे डिसाइड होते हैं, राइट? वो ऑडिट की जो किताब में रटा रटाया नहीं चलेगा. यू नीड टू गिव अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर. आपका जेन्युइन लर्निंग काम आएगा इंटरव्यू में. Then again, this type of summary you prepare, what type of issues which you have identified, either there's a design issue, operating efficiency issue, or a compliance issue, and what is the risk rating for the entire process which is there. Okay, then you find out any of the deficiency and observations. So मैंने देखा कि on 1st 4 2024 2022 of physical verification of total 7 assets, physical verification a total of 7 fixed assets were not found at the mentioned were mentioned in the fixed asset register amounting to 7 crore rupees. है ना, 7 fixed assets मिसिंग थे जो fixed asset register में थे. ये मैंने देखा, राइट? वो मैंने क्या देखा, राइट? आई हैव अंडरस्टूड कि भैया दिस इज व्हाट द लैप्स इन द प्रोसेस. नाउ व्हाट आई विल डू, आई गो टू मैनेजमेंट एंड आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन. तो मैनेजमेंट ने बोला था out of this they said that the management to explain the fixed asset ID assets bearing ID 3 15 and 4, मतलब 3 fixed assets were disposed of, right? तो मैनेजमेंट के पास गया, उनसे एक्सप्लेनेशन लिया. Now what I'll do, I'll give a recommendation. I'll say that the management need to design a proper system and processes so as of a disposal and safeguard of an asset. मैंने recommendation दिया, and then I'll map it out कि this is a potential misappropriation of fixed assets, inventory fixed assets आएगा. ठीक है, तो this is what it is, and again I'll give a timeline for a recommendation. Now, how does this far different from a start audit, guys?
अरे स्टार्ट ऑडिट में आप क्या मैनेजमेंट का ऐसा ओपिनियन ओपिनियन डालते थे क्या? नहीं, आप तो सीधा अपना ओपिनियन चेप देते थे कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज व्हाट इट इज, राइट? यू हैव गिवन योर एडवांस ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन, व्हाटएवर ओपिनियन यू हैव टू गिव, यू गिव. But in internal audit, what do? You identify the issue, you go to a management, you ask their explanation, you give your suggestion, and then you would say the timeline is time tak kar lo. Are you getting here? What is the difference between two? So internal audit is more from the value perspective. That audit is more from the compliance perspective, right? So that is what it is. Now many of the top management have now changed their perception that if start audit इतने ढंग से करवाओ कि दिक्कत ही ना हो कंपनी में, राइट? से फॉर एग्जांपल मुकेश, अब जैसे अब आज का ही केस ले लेते हैं, राइट? ऐसा भी हो सकता है, कैन यू थिंक और यू कैन गिव मी द आंसर इन द चैट, कैन इट बी पॉसिबल दैट द ब्राइबरी व्हिच हैज हैपेंड इन अदानी केस वेयर गौतम अदानी माइट नॉट हैव नोन? हो सकता है ना? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है गौतम? अरे ऐसे मत देखो, मैंने नहीं किया भाई, है ना? ऐसा भी हो सकता है ना कि गौतम अदानी को पता ही नहीं हो, उन्होंने बोला होगा अपनी टीम को ट्राई टू इंश्योर दैट यू गेट द टेंडर आउट और ट्राई टू इंश्योर दैट यू गेट द डील, हो सकता है. When would Gautam Adani come to know? When statutory auditor like you comes and tell, "Are you getting it?" So what is really important is nowadays the management or a top management will have a faith on the statutory auditor. Will say that कि देख भाई auditor तेरे पे भरोसा कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है to check my books of accounts and check everything out, right? So that is what it is. So what is going to be happening in internal audit? Please understand, internal audit is more about understanding the processes and giving your recommendations which are there. Now, if you talk about in detail internal audit processes, there are different internal types, internal audit processes, which are mostly going to be high focus in the interviews. Sakshi ji, say for example, they will focus more on P2P. What does P2P? Interviewer से बोलेगा, explain the P2P process. So don't say ille. I don't know what is P2P. P2P होता है procure to pay, pure purchase process. H2R is hire to retire, O2C is order to cash, or R2R, मतलब revenue to receipts, also known as revenue to receipt. There's a thin line of difference between two. Fixed asset process is also there. Cash and bank का इसमें भी further division, receipts and payment. Inventory process is also there. FSCP, FSCP is financial statement closure procedures. तो काफी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, राइट? वेयर यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर नीड टू सी कि भैया क्या प्रोसेस है, राइट? उसमें क्या रिस्क है एंड क्या कंट्रोल लग सकते हैं या क्या कंट्रोल कंपनी ने लगाए हैं उस प्रोसेसेस और रिस्क को कम करने के लिए, राइट? रिस्क को कम करने के लिए कंपनी ने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं, गेटिंग इट? ठीक है. तो दिस इज व्हाट अ प्योर रोल ऑफ एन इंटरनल ऑडिट. ठीक है. इसमें एक डाउन साइड ये हो जाता है, काफी बार प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत होता है, राइट? दोस हु वर्कड इन इंटरनल ऑडिट माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. से फॉर एग्जांपल मल्टीपल टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स कैन बी गिवन. तो से फॉर एग्जांपल Adani hired a internal auditor, says that define the process for our organization so that this type of fraud does not happen today. This type of fraud does not happen again. आप समझ रहे हो? तो ये क्या है? प्योर डॉक्यूमेंटेशन वर्क, एक एसओपी फॉर्मुलेशन वर्क हो गया. ठीक है. तो ऐसा भी काम होता है. अगेन यू नीड टू प्रिपेयर एन आरसीएम्स एंड स्टफ. इफ दोज हु हैव डन इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस jargon टर्म्स. जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं. ठीक है. डन. आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई होप द सेशन इज नॉट गेटिंग हैवी. अरे समझ रहा है कि नहीं? बोलते ही नहीं रे, बड़े शांत बच्चे हैं. बोलो 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 बोलो, चैट पे बोल दो यार, चैट पे. हाँ, समझ रहा है? फीफो तो नहीं हो रहा है, फीफो. वर्मा जी कह रहे हैं फीफो तो नहीं हो रहा है सर. ओके जी, ओके. चलो ठीक है. अब मुझे तुम्हारा ध्यान बढ़ाने के लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, राइट? नाउ टाइम फॉर अ गिव अवे. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. आज का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. हाँ, कल हम नहीं खेले थे तो आज दो खेलेंगे. जनरली हम लोग खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. आ जाइए, रेडी हो जाइए. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतने वाले को मिलेगा, राइट? द विनिंग पर्सन विल गेट 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर विच इज देयर. तो फटाफट फटाफट आ जाइए. यू नीड टू गिव योर आंसर इन द यूट्यूब लाइव चैट. यूट्यूब लाइव चैट पे आपको आंसर देना है. जो पर्सन सबसे पहले आंसर देगा उसे मिलेगा इनाम. उसका नाम मैं नोट डाउन कर लूंगा. विल अनाउंस अ विनर ऑन यूट्यूब लाइव. विल अनाउंस द विनर नाउ. चलो जाओ, यूट्यूब लाइव पे चल रहा है. यूट्यूब वाले भी साथ में पार्टिसिपेट करिए. लेट्स सी हु कैन आंसर दिस. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट? वट एवर कॉन्सेप्ट आई हैव, नहीं, यू कैन नॉट आंसर इट. यू कैन आंसर इट आउट हियर बट यू विल नॉट गेट नथिंग. यूट्यूब पे करोगे तो मिलेगा भाई. ठीक है. चलो ग्रेट. रेडी हो? यूट्यूब की जनता, जूम की जनता, रेडी हो जाइए. हाथ गर्म कर लीजिए. क्वेश्चन आपके सामने, आंखों के सामने आ रहा है. 3, 2, 1, गो.
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट, बहुत ही सिंपल, एकदम पांचट क्वेश्चन। ये तो गलत कोई कर ही नहीं सकता। बहुत ही गलत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, इसमें भी लोगों ने गलत आंसर दिया, ओ भाई साहब। ओ भाई साहब। चलो ठीक है जी, ठीक है। इसमें भी लोग अलग आंसर दे रहे हैं भाई। ठीक है भाई। चलो ग्रेट, आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर। कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अरे ऊपर का देख के लिख लो तो ही सही हो जाएगा। ठीक है। नेवरदलेस राइट, आई थिंक वी गॉट द विनर। आई अनाउंस द विनर एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, चलो प्रिंस जी, आपने तो सही आंसर दिया है। ओके जी, ओके। ठीक है। चलो, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डोमेन विच इज देयर, विच इज ऑन फॉरेंसिक। इंटरनल ऑडिट समझ में आ गया, स्टार्ट ऑडिट समझ में आ गया। थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग एंड ग्रोइंग डोमेन, अदिति जी, एंड दैट इज अ फॉरेंसिक ऑडिट. Now, forensic is related to more focused on a fraud side. Nowadays, lot of companies or in-house teams are a lot of companies are hiring their forensic audit teams separately. Now, please understand. Let us take a very small case of forensic where you might be able to understand it in a better way. So, say for example, there is a company called as a Bharat Pay, right? And your favorite Ashneer Grover Bhaiya was there in a Bharat Pay a few years ago. Now, all of a sudden, the investors of a Bharat Pay had a doubt in a company that the founder of a company is using. The founder of a company is using the company's money for a personal purpose. So, what they did, they hired a forensic audit team. Right? Did anyone know who was a forensic auditor of a Bharat Pay? किसी को पता है forensic auditor कौन था भारत पे? अरे बोलो, सोचो सोचो, पता होगा आपको। हाँ? पता है, नहीं पता है? नहीं पता है, हाँ, पता भी नहीं हो सकता। द रीजन बीइंग द टाइम यू कम टू नो, राइट, और द टाइम अश्नीर भैया कम्स टू नो, यू नो व्हाट इज गोना बी हैपनिंग, राइट? हाँ, तो अगेन, व्हाट इज फोरेंसिक ऑडिटर डूइंग? Forensic auditor is doing a detailed, thorough research, detailed, thorough analysis, detailed, thorough identification कि whether the fraud has genuinely happened or not, right? अब जैसे कि अब ये डाउट हो गया अदानी के केस पे कि भाई ये अदानी ने 2000 करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नमेंट को टेंडर लेने के लिए। आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव सीन द टुडेज न्यूज़ और नॉट, बट अब मुझे डाउट हो रहा है कि भैया ये दिए कि नहीं है, नहीं दिए, तो व्हाट आई डू, आई हायर अ फॉरेंसिक ऑडिट टीम. What forensic audit team will do? They'll identify कि genuinely this fraud has happened or not. Now, why you guys are gonna be preferred here? Because you guys are a numbers person. आप समझ रहे हो, आपको धंधा समझ में आएगा. You guys will be very easily able to do it out and identify कि whether the fraud has happened or not. Now, why this is really growing? This is really growing because start audit is a requirement of a law. Internal audit is again a requirement of a section which is there, right? Again a part of a law. बट फॉरेंसिक ऑडिट मेरी मर्जी यार, मुझे डर है, मुझे डाउट है इस आदमी पे, इसके पूरे ट्रांजेक्शन वेरीफाई करवाओ, ये कोई थोड़ी लॉ में लिखा है. आप गेटिंग इट? मैंने एक को फाउंडर हायर किया, मैंने एक बंदा हायर किया इन माय कंपनी, सीटीओ और एनी ऑफ द पीपल आउट, मुझे इस पे डाउट है, तो इसके पूरे ट्रांजेक्शन मुझे चेक करवाने हैं. आई हायर अ फॉरेंसिक ऑडिट. ठीक है. So there are multiple types of fraud in a company which are happening in. एक छोटा सा डायलॉग है which I generally say, right? एक बच्चे को मैंने पूछा, डू यू थिंक दैट ऑल द कंपनीज आर थीव? आपको भी पूछता हूँ, क्या हर कंपनी चोर है? अरे बताइए, क्या हर कंपनी चोर है? पायल जी कह रही है हाँ हाँ. अरे नहीं बेटा, क्या हर कंपनी चोर है? आंसर है दो. अच्छा, अदर सवाल. क्या हर कंपनी चोरी कर सकती है अगर कंट्रोल्स और प्रोसेसेस में लैप्स हो? क्या हर कंपनी चोरी कर सकती है अगर प्रोसेसेस और कंट्रोल्स में लैप्स हो? हाँ जी. अच्छा, एडवांस क्वेश्चन. क्या कंपनी चोरी कर सकती है चाहे प्रोसेसेस और कंट्रोल स्ट्रांग हो? कैन कंपनी डू अ फ्रॉड इवन इफ द प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स आर स्ट्रांग? आंसर है. तो हो सकता है इंटरनल ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में बोला सब चंगा है, सब चंगा है, बट व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फ्रॉड, वी आर फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ केसेस व्हिच आर कमिंग इन, राइट? So what I'm trying to tell you out here is, right, forensic is more about
Forensic is more about identification of a fraud. आपको उल्टा सोचना पड़ता है कि which all areas the people can do a fraud, how they can do it. Okay, so that is what it is. So that is one of the very growing domain in our forensic audit. Next, very interesting domain nowadays where a lot of my students have got placed, and that is a financial due diligence, FDD. बहुत ही high demanding domain. Many of the people have built out their career into investment banking from a FDD domain. Right. This is generally going to be covered tomorrow in a very detailed manner with the investment banking session. कल investment banking का session है. Right. तो investment banking के साथ ही हम इसे cover करेंगे because this is very much related to the IB processes and the funnel, which I'll be covering it in a very detailed manner. But this is very growing domain and one of the very interesting domain where you can build your career into, which is a financial due diligence. राइट अभी क्या होता है इसको नहीं समझेंगे, कल का सेशन आइए, सपरिवार आइए, तब हम बढ़िया से समझेंगे. Next very interesting domain, which is many of you might have worked into, and that is next is a taxation domain. Taxation में let us talk about two basic taxation domain, which is direct tax, right, and indirect tax, which you must have seen. But you must not be aware of the structuring and the funneling which is there in the organization when you go there. First is GMS services. So when you will be qualified or when you are going to be hunting for a job, you will mostly see the vacancies with the name called as a GMS. What is GMS, guys? Global Mobility Services. Nihal ji, ध्यान से सुनिए. So say for example, a client is sitting outside India and you are giving a consultation work or advisory work to those clients outside India. That is mostly called as a GMS. Right. So say for example, you're working on some of the expats or some of the NRI accounts which are there. तो उनके लिए आप अगर कुछ कर रहे हो तो जीएमएस में जनरली दिस इज गोना बी कमेंट. ओके. नेक्स्ट, टैक्सेशन आल्सो हैव अ सेपरेट डिवीजन ऑफ एन एफएस व्हिच इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज. विवेक जी, so what is going to be happening when you are going to be going to the FS sector? Again, you are mainly going to be dealing with the financial services clients, which is insurance companies, NBFCs, mutual funds. तो उस साइड आप ज्यादा टैक्सेशन में डील करेंगे. Next, very interesting domain, Sharma ji, which is M&A taxation. Very interesting and lucrative part where many of the people build their career into M&A tax. And from here also, I've seen a lot of people have moved to investment banking side or some of the deal side or valuation side over a period of time. So whatever deals happening in or many of the deals where you're going to be giving a lot of advisory plus checking the taxation angle from the angle of mergers and acquisition. तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा vacancy आती है. A package is bit higher in M&A tax as compared to other taxation domains. Next is CIT, corporate and international tax. Right, again, we are going to be working on some Indian clients. We are purely involved in their taxation work. Three type of major work are there in the taxation, which is compliances, advisory, and litigation. Now, since you will be a qualified chartered accountant soon, I would highly recommend you to please see what is the percentage of the work you're going to be doing in all the three areas. अब इसमें generally you should favor or try to focus more on advisory or litigation instead of a compliance, because it should not happen that after becoming a CA also you're just filing a GST return or income tax return. Does not add a value to your profile, right? अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस अभिषेक जी ने बोला कि सर हम तो टैक्स के बंदे हैं, हमें जाना है टैक्सेशन में, कोई बात नहीं बेटा, इंटरव्यू में भी मजे ले लेगा इंटरव्यूअर आपके. कैसे बोलेगा? ठीक है बेटा, आपको एडवाइजरी और लिटिगेशन करना है, वेरी वेरी गुड, ये लीजिए आपका, आप ड्राफ्टिंग करके दिखाइए. प्रैक्टिकल, राइट. आजकल तो ऑफिस में बुला लेते हैं, बोलते हैं लीजिए सर ये बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट आप खोलिए, जो भी आपको करना है इस बेयर एक्ट में आप ढूंढ लीजिए, डू अ ड्राफ्टिंग एंड हेल्प मी आउट विद द एडवाइजरी वर्क. So this type of case studies are given in interviews where the companies are also very particular about this, right? So definitely अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा exposure आप इस side लीजिए, which is purely related to advisory and litigation. Since you are demanding that give me an advisory and litigation, so you should also know the basic of this, which is very very important. And next is, of course, your transfer pricing and international taxation. Again, a niche profile, but those who are very much interested and keen into TP, you can build your career here as well. Again, इसमें एक चीज अच्छी होती है, right? You can easily move to a global countries or global places out when you are good at transfer pricing, right? So TP से मैंने काफी बार देखा कि people are moving outside India, which is into TP domain, which is there. Okay, so these are the more funneling side of a direct taxation. इन सब साइड आप ट्राई कर सकते हो डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए. आईडीटी में ऑफ कोर्स यू हैव स्टडीड ऑफ थ्री मेजर थिंग्स, राइट? जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी. तो अगेन इसमें ज्यादा वो नहीं है, बट यस अगेन इट्स अ वेरी ग्रोइंग डोमेन व्हिच इज मोर टुवर्ड्स एडवाइजरी एंड लिटिगेशन. टैक्सेशन में आई हैव हर्ड दैट
जो अभी नया एक्ट है विच इज गोना बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस नेक्स्ट बजट. तो होपफुली यू गाइस विल बी वर्किंग ऑन दिस, तो काफी थोड़ा सा डिमांड बढ़ेगा, राइट. जैसे ही आएगा डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बी हैव योर टोज एंड गेट रेडी ऑफ दिस. GST, customs and FTP, these are the three major domains which you should be again working into. You'll be working into. Majorly, to be honest, GST ज़्यादा रहता है. Customs and FTP is very specific to some areas or regions. So that is what it is. इसमें आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन ग्रो हुआ है, वेयर वन ऑफ माय वेरी गुड मेंटर भावेश ठक्कर सर इज देयर, राइट, एंड ही इज ऑल्सो गोना बी अ मेंटर इन GR बैच. ही इज अ पार्टनर विद EY. So it's a domain called as Subsidy. सब्सिडी डोमेन, राइट. काफी ज्यादा पैसा है, राइट. इग्नोर द स्पेलिंग. यस, काफी ज्यादा पैसा है एंड काफी ज्यादा कंपनी को रिक्वायरमेंट्स है. तो से फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक अ वेरी सिंपल केस. से फॉर एग्जांपल रिलायंस हैव 100 करोड़ ऑफ रुपीज विद देम एंड दे वांट टू सेट अप देयर प्लांट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोन. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, नेहल जी, इफ दे कम्स टू यू एंड सेज दैट कि नेहल जी बताइए किस इंडिया के रीजन में मैं इस प्लांट को सेटअप करूं. आप समझ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. तो निहल जी ने बोला महाराष्ट्र में कर दो, बट ऐसे थोड़ी करेंगे. आई विल सी कि विच स्टेट इज गोना बी ऑफरिंग मी अ गुड सब्सिडी, विच स्टेट इज गोना बी ऑफरिंग मी अ फ्री लैंड, विच स्टेट इज गोना बी ऑफरिंग मी अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, विच स्टेट इज गोना बी ऑफरिंग मी अ लोअर GST रेट, और विच स्टेट इज गोना बी ऑफरिंग मी अ कैशबैक, और क्या कहते हैं इसमें, they will charge a lower taxation structure. So all the grants, so sorry, yeah. So all those things which are very very interesting and growing this and this practice is growing to a next level, right. तो काफी ज्यादा इसकी भी practice grow हो रही है, right. And I'll ensure that you meet the mentor out of that domain. So he's a very good mentor. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन जहाँ पे काफी लोग अभी जाने का कोशिश कर रहे हैं, विच इज प्योर ऑफ द सब्सिडी साइड. तो इसमें स्टेट सब्सिडीज and all these domains are there where you can just read out and then you can enter into this sector. Subsidy side grow हो रहा है. इसके साथ साथ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू आउट संस्कार एंड other people out that कि if you talk about a lot of countries, right, or GCC countries, or if I talk about UAE, UAE may taxation structure has also introduced, which is related to this. So UAE may there's a corporate tax, right? The corporate tax is there, which is around 9% after some limit. The VAT is also there, right? VAT is around 5%. ठीक है. But again, VAT filing उनका बहुत ही simple है. Even a 12th standard student or people can also do. India जैसा नहीं है कि भैया आपको इतना मेहनत करना है, ये करना है, क्लाइंट को उल्लू बनाओ और 1,000 रुपए 2,000 रुपए ले लो, राइट. यूएई में बहुत सिंपल है. इट्स जस्ट आई थिंक दे हैव टू फिल आउट 6 to 7 figures. यूएई स्ट्रक्चर फिल हो गया, बट अगेन कॉम्प्लिकेशंस विल इंक्रीज देयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वन गुड थिंग इन अ टैक्सेशन इज 10 बार तो साइट क्रैश होती है. हाँ बेटा, इतना सच नहीं बोलते, राइट. निर्मला दीदी नाराज हो जाएगी. So that is there. One of the good part which I've heard that Oman is planning to have their personal income tax, right? Income tax they are planning in. So if that comes into a picture, the huge demand of CAs will be increasing it over a period of time. Okay, so that is what I can say. But again, taxation is a growing field. So if you're interested, you can go here. But again, be it a niche field. Exit थोड़ा सा tough हो जाता है once you build your career into taxation because uh, other fields are far more different as compared to this. Okay, so this is pure taxation domain which you can target it on. है ना. ग्लोबल मार्केट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, राइट. वर्क इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, वेरी डिफरेंट सेंस. तो आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन यू आउट फॉर इन अ डिफरेंट सेशन, बट यस यू कैन also target that as well for your career journey. Okay, now one very interesting thing which I would be telling you out, since what we have done for you is many of you target to prepare for a respective domains. So what you can do is you can use our AI interview bot as well, which can help you to prepare for that domain in a better way, which is the AI interview bot. You can click on interview bot. The website is tools.cmong.com. Now, whichever domain you are interested into, right? I want to build my expertise into start audit domain. So you can click as a fresher. Once you click here, click on next, 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 next. And once you are here, the bot is going to be asking you the technical questions related to that domain. Okay. So, hello, Shivam. My name is Lisa, and I'm a chartered accountant recruiter with a specialization in statutory audit. It's great to meet you today. Can you tell me a little about yourself
and what interests you in the statutory audit domain? Okay. So you can practice with this bot for whichever domain you're getting in, right? This bot runs on a 50 coins, right? And you get 100 coins once you log in, and additional coins if you want, you can recharge it out for yourself. So again, this we have tried to bring out a best initiative for you, right? तो संस्कार जी आप सपरिवार ट्राई करिए से and definitely let us know the feedback कि what can be improvised on, but that is what you have built for you guys. You can try it out. Okay, and when you give the response, you can just click on record your answer. Right. So sorry, I don't remember. Okay. So after that is done, the bot is going to be asking you some next question based on that. So I No was just problem at all. Let's move on. Can you explain what a statutory audit is and its main objectives? okay. So now it started grilling me out. What are the objectives of stat audit? What do you do? Okay, so it's going to be helping you, Vermaji, especially to help you out to improve your communication skills, plus help you prepare technically for the content out. Tomorrow or day after tomorrow, our communication bot is also going to be launched, so it might be helping you to the next level to improve your form skills, etc. ठीक है तो दिस इज अ बॉट आई वुड हाईली रिकमेंड टू यूज इट आउट ठीक है यार फ्री में ही है कर लो भाई इतना कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए राइट जस्ट टू इंश्योर दैट यू guys get the best things in a market and you don't have regret in your life later saying that कि भाई why don't I try this out before कर लो यार फ्री में ही है क्या दिक्कत है ठीक है right so that is a very good initiative which we are running in for you guys so that you guys do not have any regret later on for other things you can just visit that website lot of other tools are also there ठीक है Yes, how I can remove my hesitation to talk in English. Again, very important, just start English communication. I hope till now the things are okay. The session is good enough. I hope the session is not getting heavy because a lot of domains which are left to cover in. Right, should we move forward? निहल जी आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? निहल जी कह रही है सर पेट में भूख लग रही है मम्मी ने 2 बार बोल दी आजा आजा खाना खा ले ऐसा तो नहीं हो रहा है निहल जी आपके साथ बोल ही नहीं रही यार वो बोल ही नहीं रही इतना गुस्सा हो गई हो चले आगे चले No, sir, nothing is happening like that. चलो ग्रेट Chalo, great. Happy to hear this out. Let us move forward with the next domains which are there. Okay. The next very interesting domain which we are going to be talking about, and that is related to the finance. But before that, we already had a discussion yesterday on a management consulting session. So if you have missed the same, you can just check it on my YouTube channel, which is related to the management consulting. है ना तो कंसल्टिंग का कल हो गया हमारा Now let us move to the finance structure, right? Let me just share the screen once again so that I can explain you the finance structure. Now, finance structure is one of the very very demanding domain because this is something which you will be choosing either by choice or either by force. मतलब क्या सर? मतलब this is a domain where you will be having your exit in a journey और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई इधर काम करेगा ही करेगा. Right? What is a finance? Generally, we call it as working in an industry where your growth funnel will be that you will be becoming a CFO of a company. Okay. Now, once you join a finance domain, there are multiple subdomains available into different companies and roles. Like there is an account receivable team, accounts payable team, inventory, expenses, treasury, FP&A. You must have heard those words. FP&A are very buzzword in the market. Internal audit, pure company can have their own in-house internal audit team. So that is what I'm talking about in-house taxation team and GL and MIS team. So every team have a different function. Every team have a different role when you are going to be joining a company as a financer at large. Now let me just speak about 1, 2, 3 important roles. So one important interesting role you will be able to see when you will be joining this, which is an R2R role. What is the R2R? R2R, many of time you will see this vacancy, Sharma ji on the LinkedIn. Okay, there's a vacancy in R2R domain or Suraj you will see that there's a vacancy in R2R domain. What is this? Record to report. इसका मतलब होता है you are gonna be recording a transaction and reporting a transaction. मतलब recording means accounting bookkeeping and reporting means preparation of financial statements and giving this report to the investors or users of financial statements. That is a pure R2R case. राइट तो आप क्या कर रहे हैं पहले अकाउंटिंग कर रहे हैं बुक कीपिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं दैट इज अ प्योर R2R रोल व्हिच इज दैट Now, when you join a bigger companies like a Reliance, you will be plotted in a division like accounts receivable. You will be taking care of the revenue side of a company and the receipt side of a company. See whether the payment have received correctly or not, right? Data aging, should we make a provisioning for a data aging, right? We'll work with the sales team highly, saying that ki, bhaiya, the amount is not received. Please ensure that you take a proper follow up with the data and all this. Payable team is again a payment side where you are going to be responsible.
to see whether proper payments are made on a time or not, right? You're getting a proper GST input for the amounts which are spent. ये सब चीजों में you'll be responsible. Inventory side, if you're responsible for inventory valuation, right? Expenses again, booking and provisions which are there. इसमें again you have a fixed assets, तो FA का separate team हो सकता है. Now, if you go to bigger companies like Reliance, you might be plotted into one of the subsidiary. उसके you'll be plotted into receivable side, and उसमें भी many a times you'll be plotted only for a provisioning of a contingent liability or provisioning for XYZ thing. तो ऐसा भी होता है. A bigger company, smaller role. A smaller company, more role. ऐसा काम होता है. Right? Treasury is again very interesting role where you might be responsible for companies' cash flow management, working capital management, investments, right? Forex, futures, and all those contracts which are there. तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा responsible रहेंगे. Which is gonna be there. One of the very interesting domain is the FP&A domain. What does FP&A means? The word itself says financial planning and analysis. So let us take a very simple example. Now Jio says that यार मैंने है ना देखा काफी लोग are very interested to purchase an iPhone. So Jio says that let us also launch our iPhone. So do you think that Jio can launch this iPhone like this only? No. What they need to do, they need to plan those things financially and analyze those things. This is called as a financial planning and analysis. मतलब क्या? Jio ने बोला चलो यार let us launch an iPhone. So what they did, they gave those tasks to a financial planning and analysis team. So they'll make a financial plan कि we will need 100 crore of rupees or 1000 crore of rupees to launch a phone. Okay. अब इसमें पैसा कहाँ जाएगा? We'll need a phone for purchasing a land. We'll need a phone for purchasing a machinery. We'll need a phone to. We'll need this money to do some marketing and a lot of other stuff which is there. Now, once they have decided, they will say that, chalo, after this is done, we'll manufacture a phone and we'll sell the phone. We'll sell the phone in two states called as Maharashtra and Gujarat. तो महाराष्ट्र में मैंने प्लान किया कि 10,000 फोन बेचेंगे. गुजरात में आई प्लान दैट आई सेल 10,000 फोन. Now, actual, this is planned number. Actual में सेल हुआ 10,000 फोन and गुजरात में they were able to sell only 8,000 फोन. Now, what I have done, this is actual number. So what FP&A team will do, they will now analyze what the hell have went wrong in a Gujarat. Why the hell 4,000 phones were not able to, they were not able to sell. So what they are trying to do, they are now analyzing it. Financially, they have planned it. Now they are analyzing it. क्यों गलत हुआ? Why this is went wrong? What strategy they need to change? Right. So what they're trying to do, this is more of a company-specific planning and analysis when you're going to be responsible for the business function to ensure that the companies are going to be following it out. Okay. You plan the numbers, analyze it, and ensure that that is going to be working as per the plan. Why it is financial? Because numbers are involved. Okay. Internal audit, we know, right? But company can have their own in-house internal audit team, tax team, which is there. And who is going to be responsible for preparation of financial statements and proper accounting and bookkeeping? GL and MIS team are going to be responsible. They're also responsible for audit. They're also responsible for closure of books, and they're also responsible for India's accounting and other stuff. So this all roles are going to be offered when you're going to be joining up your finance team, right? So that is something which you can see, which you can target when you're really interested and passionate to work in a finance role, which is there. Okay. तो ये है फाइनेंस रोल. अगेन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन फाइनेंस रोल, आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाओगे. एट द एंड योर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी विल बी, यू विल बी अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी which is any of the company, and then you can move to another company or domain. Okay, that is that. प्रिया जी कह रही है सर आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैन आई गेट देयर विदाउट एनी एक्सपीरियंस? बिल्कुल प्रिया जी, आप जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको आना पड़ेगा कल के सेशन में. राइट, टुमारो वी हैव अ वेरी डिटेल्ड गाइडेंस सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विच इज दैट. आई होप द फाइनेंस डोमेन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. हाउ डज अ फाइनेंस फंक्शन वर्क? एक कंपनी में फाइनेंस फंक्शन क्या होता है? अरे बोलो बोलो बोलो, चैट पे बोलो यस नो नो, यस यस यस, नो 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 नो, यस 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 यस, नो 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 नो. Right. Chalo, great. Now, whatever things which we are discussing here, just in a span of 1 hour or 2 hour, right, which is a very small thing. But my focus is in a workshop, and when we talk about the workshop, it's a getting interview ready workshop, where I invite the mentor for respective domain, right, and they will have a session for 1 hour each. मतलब 1 घंटे का सबका session रहेगा mentor का, right, which boils down to around 10 to 15 odd hours. After that is done, I'll have an additional session for 10 hours on all the domains, which is again totaling of 25 hours. After that is done, I'll give you a masterclass of that domain, which will boil down to again 20 hours, which is a 45 hours. And within 45 hours, you build an expertise into that domain. तो अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटे का ज्ञान सुन के I'll build an expertise, ऐसा नहीं होता. It's just a brief that you're getting in, कि this is what it is. But to understand what is the right domain for you, I would recommend you to have a thorough research, or if you don't want to do a thorough research, of course, we are happy to help you out to guide you in the sessions as well. ठीक है?
तो मैं काफी ज्यादा डोमेन पे बहुत ज्यादा स्टिक करता हूँ, द रीजन बीइंग दैट इज गोना बी अ स्टार्टिंग पाथवे। अगर स्टार्टिंग गलत हुई तो एग्जिट फिर डिफिकल्ट हो जाता है। से फॉर एग्जांपल किसी ने टैक्स में करियर स्टार्ट कर लिया एंड आफ्टर दैट इज दैट ही फाउंड आउट दैट मेरा तो इंटरेस्ट आईबी में था, it will be very very difficult for him to move to an IB, to be honest, right? Which is going to be there. So start is really important, and that is why we have a very detailed section which we have planned it out for you guys in our training workshop. Just an update for the same. The batch is starting from 25th, right? Morning evening batch, right? This is the first batch of our pre-result, right? And definitely it's going to be helping you out to get into your dream companies. Batch timing again morning evening 7 to 10:30, 7 to 10:30, 25th November से 14 दिन का बैच है, लाइव बैच है, बहुत मजा आता है। And best thing, simulation is incorporated in this batch, right? So which is only in the pre-result batch which you're going to be joining in. I think काफी सारे लोगों ने join भी कर लिया है. If you've not joined in, right, don't worry, please join in. And if you have any more doubts related to that as well, we have a separate session on 23rd of November where I'll just talk about the batch in a very detailed manner. Chalo, great. Now let us move to the next very interesting domain, which is related to banking, right? Not investment banking. I'm talking about the normal banks. Any info about pre-result drive? As of now, no, right? But yes, definitely will keep you posted if any drive comes in. Okay. Now, many of the hiring you will be able to find it out. A lot of hirings you will be able to see regarding the banking domain. आप देखोगे काफी सारे students are getting placed into banking domain, and if you see the ICA prospectus also, you will see a lot of students are getting placed into banking domain. About banking, I'm talking about banks like ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank, right? AU Small Finance Bank. यहाँ पे काफी ज्यादा hiring होती है, right? So what type of hiring which are gonna be there when you are gonna be talking about a banking? Let me just speak to you in a short. So let me once again share the screen. See what type of hirings are going in this type of a banking domain. So there are 2 to 3 major vacancies or hiring which are going to be there, right? The first is RM role. RM का मतलब होता है relationship manager. Second, you will find credit manager, which is CM role, credit manager. Third, which is treasury, right? Which is there. These are the 3 major roles where hirings are there. Of course, there are other roles like finance, internal audit, compliance. ये सब roles भी हैं, but सबसे ज्यादा hiring इन 3 domain में होती है when you go to banking domain. What is RM? RM means relationship manager. इसका काम होता है to bring business. To bring business. मतलब क्या? Say for example, imagine that CMO have 100 crore of rupees in a bank, right? The role of a relationship manager is to ensure that they are making a fixed deposit of this 100 crore rupees. Say for example, if CMO needs a fund, they should ensure that the CMO is taking a fund from ICICI Bank only. So what is relationship manager doing? They are going to be pitching the customers, they are going to be interacting with the customers and ensuring that the money is going to be used or money is going to be they are transacting with the company on a frequent basis. So say for example, if I need a loan of 100 crore of rupees to grow my venture, who will come? Relationship manager will come to me saying that, sir, do you need a loan? I said, yes, bang on, I need a loan, right? So relationship manager will ensure that I am getting a loan from the bank. Now, what credit manager will do? Credit manager will check the credit worthiness of a company, right? Before giving a loan, credit manager check करेगा कि क्या CMO को 100 crore का लोन देना भी चाहिए या नहीं. Now, देना चाहिए तो what all things we will require as a collateral or a security when the loan is given, right? They will check the projected financial statement. They will check the existing financial statements, and all those things are going to be checked by credit manager. Now, the question comes is why the hell we are needed here? Since you are a chartered accountant, you are a number person, so you will be preferred in either of the roles depending on your area of interest. But yes, you guys understand the products easily, so you will be mostly plotted here into these 2 sectors. Third is a treasury. Treasury is more about your fund management. Again, सबसे ज़्यादा पैसा बैंक के पास है. One of the very big business which they are earning and doing it out is either by this forward, future, forex, and all these transactions. इससे काफी ज्यादा बैंक पैसा कमाता है, right? So for that you will be very much responsible for the same, right? Where you are going to be working with the clients. अगर किसी client को कुछ चाहिए, right? They need to make some payments in dollars. So you might be helping them out with the same. तो काफी सारी चीजें रहती है where you can responsible. Plus again working capital management, investments, and other decisions are part of a treasury function when you are. So 3 major roles when you are going into a banking domain: RM, CM, and treasury. Okay. Yes. So again, this is again growing domain where a lot of people try to build their journey into this sector or domains.
Nowadays, similarly, the same type of hirings are also happening in NBFC space. Last time I've seen a lot of my students have got placed into an NBFC space. तो NBFCs में भी काफी ज्यादा वैकेंसीज आ रही है into different sites if you could see. तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है. Insurance side is huge, very growing to a very larger extent. So that is also there. तो ये दोनों side अभी काफी ज्यादा growing and huge hiring. I could see a lot of my students are working here into these two sectors. Right. So if you do and start audit in BFSI sector and if you then move to insurance companies or sectors, पैसा बहुत है. But again, it's up to you whether you like that sector or domain or not. तो वो एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ओके ओके ओके, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आई ऑलरेडी कवर्ड. इसमें एक fancy name चलता है which is into a finance role, which is a management trainee. What does management trainee means? We are going to be hiring you as a part of a finance organization and will rotate you across the different department of finance. मतलब पहले आपको रखेंगे इंटरनल ऑडिट में फॉर 6 months, then we'll ask you to move to accounts payable, then we ask you to move to finance, then we ask you to move to accounts receivable. तो इस तरीके से आपको रोटेट करते रहेंगे. That is what a management trainee means. We are going to be hiring you as if we want to see you as a CFO of a company after 2 few years. So that is what a management trainee function is. Okay. So this is what a corporate structure which I was talking about. Finance and banking, consulting, CFO services. I hope till now the things are okay with you. पार्थ पटेल कह रहे हैं अब तो चाय की चुस्की ही मुझे बचाएगी. ओके पार्थ जी, ओके, ठीक है, राइट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. चीजें समझ में आ रही है कौन कौन से डोमेन से आपके लिए. अरे बोलो यार, चैट पे बोल दो. हाँ जी सर, 100%, 100% समझ में आ रहा है. ओके ओके. Now again, Gaurav is saying Amazon is hiring for analyst role. What does that role means? देखो बेटा, जेडी पढ़ना पड़ता है. डेजिग्नेशन के बेसिस पे यू कैन नॉट डिफाइन इट. ठीक है. मैं डेजिग्नेशन में आपको पता है केपीएमजी बोलता है वी आर हायरिंग फॉर अ सीएफओ फंक्शन, राइट, और सीएफओ एडवाइजरी रोल. सीएफओ एडवाइजरी रोल मतलब पता है क्या है केपीएमजी का? इंड एस अकाउंटिंग बुक कीपिंग रोल. हाँ 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 हाँ. बेटा ऐसे डेजिग्नेशन पे नहीं जाने का बेटा, राइट. वैसी वाली बात है ना, बुलाती है पर जाने का नहीं, बस सही है. डेजिग्नेशन पे नहीं जाने का, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इनसाइड द जेडी एंड देन यू जॉइन द रोल. ठीक है. नहीं तो वो कहते हैं ना बीटी हो जाएगी, बस बीटी हो जाएगी तुम्हारे साथ भी. ठीक है. चलो चले आगे, राइट. नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टअप्स, राइट. स्टार्टअप्स में ऐसा भी हो सकता है कि सिंस वंस यू ज्वाइन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, ठीक है, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एफपीएनए फंक्शन ऑल्सो, फाइनेंस फंक्शन ऑल्सो, डायरेक्ट टैक्स ऑल्सो, इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो, सब आप ही को करना है. तो दैट इज ऑल्सो देयर. वंस यू ग्रो, ज्वाइन अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज एट अ ग्रोन स्टेज, राइट, तो आपको फिर डिपार्टमेंट्स मिलने चालू हो जाएंगे. बट इससे फॉर एग्जाम्पल इफ यू ज्वाइन सी तो हम आपसे सब करवाएंगे. अकाउंटिंग भी करवाएंगे, बुक कीपिंग भी करवाएंगे, एनालिसिस भी करवाएंगे, प्रोजेक्शन भी करवाएंगे, राइट. बट इफ यू ज्वाइन रिलायंस तो आपको थोड़ी ये सब करवाएंगे कि रिलायंस का सब देख लो तो इल्ले. वो बोलेंगे बेटा जाओ अकाउंट्स पेबल में इस सब्सिडरी के उसका देखो आप अकाउंट्स पेबल सही से हो रहा है कि नहीं. So that is what it is when you join a startup. Next, there are a lot of offbeat track which you can think for yourself during this career and period of a journey where you can think of entering into a lot of public policies, right? काफी लोग IAS IPS officers बनने का सोचते हैं. A lot of vacancies, Sanskar ji, are also coming to the PSU sector. If you're really interested to go there, Sanskar ji, so what you can do, you can just search on my YouTube channel how to find out a job in PSU. CMO क्लिक देना, आपको एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मिलेगा. तो उससे आपको एक एज मिलेगा कि हाउ यू कैन फाइंड आउट गुड वैकेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी. Next, there are a lot of people nowadays are trying to go into the arts section where you are part of journalism, acting, dancing, yoga, and influencer. आजकल कुछ कुछ नया नया आया है भाई. तो देखो if you are so interested into this, आप भी देखो आप रील वील बना पाते हो कि नहीं ढंग से, राइट. बना पाते हो तो देखो बहुत स्कोप है उधर भी, राइट. दैट इज व्हाट इट इज. और अच्छा कमाते हैं वहाँ पे, है ना. एक एक बढ़िया वीडियो स्पॉन्सर करवाने का और उसमें फिर लेने का लाख लाख रुपए, राइट. तो दैट इज देयर. बट इसका लाइफ स्पेन थोड़ा सा कम होता है, राइट. दैट इज व्हाट अ प्रॉब्लम इज. सो अगेन यू नीड टू सी इट आउट कि हाउ डज दैट इज गोना बी वर्किंग फॉर यू. नेक्स्ट इज सीए टीचिंग. हा, इसमें भी बहुत पैसा है, राइट. देखिए थोड़ा सा रणनीति बनाइए, राइट. देखिए कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं है बरोबर, राइट. एंड देन यू कैन ट्राई ऑफ एंटरिंग इनटू. ठीक है. कोई कह रहा है एएफएम पढ़ाने का बड़ा मन है. ठीक है बेटा, करिए, सोचिए,
right? Market is for you, but again, you need to compete and you need to prove that you're the best. That is there. और कुछ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, एक समाज सेवक ही बन जाइए. You can join some NGOs and be a part of it. That is what you can try for. ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं which you can try for yourself. Parallelly also you can try for Offbeat track for a period of time, grow it out, and then you can build your career into full time. Right? That is what. ऑडिट पढ़ा सकते हैं क्या? कोई नालायक पूछ रहा है ऑडिट पढ़ा सकते हैं क्या? अरे तुम बनाओ ना रणनीति, मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई? ठीक है, कोई पूछ रहा है ऑडिट पढ़ा दूंगा. आईबीएस पढ़ाओ तुम, आईबीएस. कौन सी किताब सूटकेस में ऊपर होनी चाहिए और कौन सी किताब सूटकेस में नीचे होनी चाहिए, ये बताओ तुम. मस्त चलेगा. ठीक है, सीक्वेंस. क्या बात है, आईबीएस. सच बता रहा हूँ, आईबीएस पढ़ाओ तुम, मस्त चलेगा. समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाना है. ठीक है. नेवरदलेस, लेट्स नॉट गो देयर. मजाक कर रहा हूँ भाई, इसको कट कर देना बाद में यूट्यूब से. ठीक है. ठीक है, तो दिस ऑल डोमेन्स एंड वैकेंसीज, मतलब दिस ऑल डोमेन्स एंड रोल्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर यू, यू कैन ट्राई इट आउट. जस्ट टू समराइज, देखो यार, सबसे पहले सीए कोर सर्विसेज में आप जा सकते हो, राइट, विच इज प्योरली रिलेटेड टू योर ऑडिटिंग में स्टार्ट और इंटरनल और फॉरेंसिक्स, राइट, विच इज देयर. जनरली काफी लोग स्टार्ट से इसलिए चालू करते हैं बिकॉज एग्जिट्स आर हायर. इंटरनल में रहोगे तो अगेन यू कैन मूव टू इंटरनल ऑडिटर इजीली, दैट इज देयर. Then you have a due diligence side where you can just go into due diligence. Taxation again, DTI, DT side, which is there. Valuation is again very interesting domain where you can go into this. Lot of companies are also hiring for a valuation, but again fight बहुत tough है. ऐसा नहीं है कि बूट हायर बोले कि मुझे valuation दे दो, ऐसा नहीं होगा, right? जैसे कि अभी मेरा एक समर्थ अग्रवाल, one of my student, he got placed in Ambit Capital. I don't know heard the company name Ambit Capital or not. इक्विटी रिसर्च में पिछले अटेम्प्ट में सिर्फ 2 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक स्टूडेंट मेरा था, समर्थ अग्रवाल. उसके 3 से 4 राउंड हुए थे एम्बिट कैपिटल में इंटरव्यू के, और उसके बाद उसको पहले 6 महीने की इंटर्नशिप मिली विच वॉज फॉर 50,000 रुपीज. 6 महीने की इंटर्नशिप में ही हैव टू प्रूव हिमसेल्फ. After he proved himself, now he is into full-time role, right? Where CTC goes approximately 12 to 13 lakh fix plus variable 30-40%. But if I ask him what is his work-life balance, right? He starts his day at 7 in the morning, right? सुबह 7 बजे जाना पड़ता है because pre-market opening they need to have a discussion with the team. After that is done, days and at around 9 or 10. उसने मुझे बोला मैं एवरेज 12 घंटे काम करता हूँ. ठीक है, तो ऐसा भी होता है because again that is very demanding job, and when you are going to IB side or valuation side, that is what is expected, right? तो थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए आपका. ठीक है, वहां पे है. प्लस सम अदर सर्विसेज में भी आप जा सकते हो, जैसे कि आजकल बहुत ग्रोइंग फील्ड में है पवन जी, विच इज एन एसएपी कंसल्टिंग रोल, राइट, ओरेकल कंसल्टिंग रोल, डायनामिक्स कंसल्टिंग रोल. ये काफी सारी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, कैंपस में आती है, ये सब रोल ऑफर करती है. विच इज प्योर एसएपी रोल, कंसल्टिंग रोल, जहाँ पे प्योरली और रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द कंपनी और कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड सॉफ्टवेयर टू न्यू सॉफ्टवेयर, राइट. तो उसमें काफी ज्यादा आजकल डिमांड है, राइट. तो दैट इज ग्रोइंग. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सम फंड रेजिंग और फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस आपने आर्टिकलशिप में किया होगा, तो काफी सारे स्टार्टअप्स में भी फंड रेजिंग में इन्वॉल्व रहते हो, या आप किसी कंसल्टिंग फर्म के साथ कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, राइट. देन यू हैव some certifications which you can be a part of where you are doing exclusive some certification. जैसे कि one of my very good friend, he is into practice, but वो सिर्फ रेरा पे ही काम करता है. This type of niche also you can build it out for yourself when you are going into the pure CA core services. IBC is again a growing field where you can try it out, so that is also very interesting. इस तरीके के fields you can try it out when you're going here. Consulting, we have covered it out in yesterday's session, right? So consulting is one of the domain. Finance and banking, I showed you the entire structure of finance and banking. And then I spoke about the banking structure, 3 major roles: treasury, relationship manager, credit manager. Investment banking is something we'll discuss it tomorrow. Then we have pure finance with leadership functions, which I have discussed. Startups is something which you can go into. Plus parallelly, you can think of doing some offbeat track for yourself in the career and journey. Okay, so this all are the major roles and avenues which you can target for yourself. इसमें से आपको ये ढूंढना है कि आपको कौन सा रोल पसंद है, राइट. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पीक टू द पीपल आउट वर्किंग इनटू द इंडस्ट्रीज, understand the role in a thorough manner, and then you decide a domain where you want to get into. Now, once you decide a domain for yourself,
वन गुड थिंग विच यू कैन अगेन डू, राइट, एक चीज हमने अच्छी की है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ वेरी टेक्निकल कोर्स ऑन रिस्पेक्टिव डोमेन्स. That is a master class. You can go to the master class also and just see which domain you want to get into. हर एक डोमेन की टेक्निकल मास्टर क्लास बनी हुई है, राइट. एंड डोंट वरी इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ जीआर, तो आपको एक फ्री में हम मिल देते हैं, राइट. यू गेट वन मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी. बट इफ जिसको सिर्फ रहता है कि नहीं ब्रो अपने को स्टार्ट ऑडिट में ही जाना है, तो आप स्टार्ट ऑडिट का मास्टर क्लास कर लो, राइट. बट उससे आपको, बट अगेन इट्स अ रिकॉर्डिंग, बाकी आपको लाइव का मजा नहीं मिलेगा विच इज देयर ऑन जीआर. नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो स्क्रोल माई यूट्यूब चैनल. YouTube channel पे I've tried to create some detailed session or few sessions on different domains, like if you could just go, say for example, कंसल्टिंग का एक प्लेलिस्ट दिखेगा आपको, एफडीडी का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला कोई है तो उसका दिखेगा, दुबई चाहिए तो दुबई का दिखेगा. देन यू कुड सी प्लेलिस्ट ऑन एक्सेल व्हिच इज देयर. सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स का दिखेगा, ऑटोमेशन का दिखेगा, इंटरनल ऑडिट का दे रहे हैं, ऑडिट का है, राइट. किसी को यूपीएससी करना है तो भैया यूपीएससी का भी है, वी इनवाइटेड एन आईपीएस ऑफिसर आल्सो. किसी को एमबीए करना है तो उसका भी है, राइट. तो वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग फॉर यू, बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू एक्ट एंड यू नीड टू वर्क. तो जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको तो ठीक है, राइट. तो दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, ग्रेट. ओके, ऐसे 360. Okay, great. Chalo, great. Now let us take some doubts which are there, and I also will announce the winner for the question which was asked. ठीक है. Yes, please. Financial modeling. सर कितने करोड़ की वैल्यूएशन है सीएमओ की? बेटा, डैडी से उनकी एज नहीं पूछते, समझ रहे हो? ठीक है. नेक्स्ट केस स्टडी. नहीं नहीं, डेफिनेटली आई हैव मेड लॉट ऑफ केस स्टडीज. अभी मैं बैठ के बहुत सारी हम केस स्टडीज बना रहा था मैं. दैट आई प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड केस स्टडीज फॉर यू गाइस फॉर द अपकमिंग सेशन. तो जस्ट है, बनाएंगे केस स्टडी, सॉल्व करेंगे, राइट. संडे को भी केस स्टडी होगा तो आइए, राइट. इट इज गोना बी ग्रेट. टुमारो सेशन इज वेरी मच इंटरेस्टिंग विच इज ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. कल का सेशन थोड़ा सा हेवी रह सकता है, तो चाय की चुस्की लेके आना या नींद पूरी लेके आना. जस्ट है. नहीं बेटा, टीचिंग वीचिंग के लिए हम हायर नहीं कर रहे. कोई कह रहे टीचिंग के लिए हायर कर रहे होगा, नहीं कर रहे भाई. ठीक है, तो दैट इज इट. चलो, आई थिंक विनर अनाउंस करते हैं. मीनवाइल यू गाइस कैन पुट द डाउट्स इन द चैट. लेट मी सी हु इज द विनर. द आंसर वाज ऐसे 300. द हेल कैट्स. नालायक नाम भी कैसा रखा है इसने. ये कौन है भाई द हेल कैट्स? मी गणेश. हम कैसे माने गणेश ही है द हेल कैट्स? हमें प्रूफ दिखाओ, हमें प्रूफ दिखाओ. सर मी नालायक, तीन लोग बोल रहे हैं. प्रिंस शर्मा भी कह रहा है मैं भी हूं द हेल कैट. प्रभजोत हाँ 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 बोल रही है, ठीक है. अक्षय कह रहा है मैं भी हूं. अरे क्या लालची लोग हो रहे. भाई साहब, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ हमें, राइट. प्रूफ दिखाओ. ठीक है, तो ठीक है, प्रूफ. तुम रुकना, जो जिसका है ना वो रुकना भाई एंड में, राइट. प्रूफ दिखा के जाना तुम हमको. ठीक है, चलो ग्रेट. नाउ लेट अस टेक द डाउट्स व्हिच आर देयर फ्रॉम द यूट्यूब लाइव एंड द चैट व्हिच इज देयर. फटाफट डाउट्स लेते हैं, मजा आएगा. डाउट्स लेते हैं, जो भी डाउट्स है डालिए, राइट. जो भी डाउट्स है डालिए. द गाइस विल बी हैप्पी टू टेक योर डाउट्स. ओके सर, कैन वी ऐड अ डोमेन मास्टर क्लास इन सीवी? यस, काफी लोग डालते हैं, राइट. एंड डेफिनेटली कैन पुट इट आउट इन अ वेरी नाइस मैनर. जैसे कि मैं आपको तो काफी सारे सीवीज भी तो दिखाया था जहाँ पे लोगों ने डाला है. तो सीएमए ऐड करेगा. देखो यार, कोई भी लर्निंग हेल्प करती है, बट टिल द टाइम यू आर लर्निंग समथिंग आउट, दैट विल बी हेल्पिंग यू. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन कैन वी अप्लाई फॉर एन ऑडिट? देखो, ऑडिट के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर सम इंडेक्स मास्टर क्लास और स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास. उससे आपको एक एज मिल जाएगा. दोनों मास्टर क्लासेस आर अवेलेबल विद अस. ठीक है. फॉरेन अकाउंटिंग सेम ही होते हैं बेटा. डेबिट जो है वो भी उनका ही डेबिट है, क्रेडिट जो तुम्हारा है उनका भी क्रेडिट हुई है, तो सेम ही है.
राठौड़ जी पूछ रहे हैं रजिस्टर्ड फॉर जीआर, हाउ आई कैन एक्सेस द डोमेन मास्टर क्लास। नालायक, क्लास ही चालू नहीं हुई है तुमको मास्टर क्लास की पड़ी है। रुक जा भाई, सेशन 25 से चालू हो रहे हैं, ज्यादा बेताब नहीं हो रहे हो तुम। रहा नहीं जा रहा ऐसा। रुक जाओ भाई, मिलेगा मिलेगा, सेशन चालू हो लो फिर सब देंगे यार, टेंशन मत लो। Related domain where you can we shift from P2P? बेटा P2P it's pure process side, right? तो आप काफी सारे कंपनीज के परचेस साइड जा सकते हो, so that is what you can do. So can we have you seen a career pivots in your experience? If so, there are any domains? देखो यार, exit is something which is dependent on a lot of factors, जिसको हम काफी डिटेल में कवर करेंगे. बट अगेन थोड़ा बहुत तो मैंने हिंट दे दिया कहाँ से आप कहाँ जा सकते हो, तो दैट इज व्हाट यू कैन डू. Is it a right to start our career in stat audit if not getting in tax in Big Four? नहीं यार, अगर आपको डोमेन पसंद है और if you have finally decided, तो I would recommend you to join from that domain only. वो कह रहा है सर्टिफिकेट एनआईएसएम का कर लूं, वैल्यू ऐड करेगा. सिर्फ करने के लिए कर रहे हो तो मत करो, सीखने के लिए कुछ कर रहे हो तो करो. ज्यादा पैसे तो मुझे दीजिए, ठीक है, ज्यादा पैसे तो मुझे दे दीजिए बस. कैन आई ब्रेक इन एनी बिग इन्वेस्टमेंट बैंक आफ्टर सीए प्लस सीएफए? सीएफए से थोड़ा सा एज तो मिलता है इन व्हेन यू गो इनटू एनी ऑफ द आईबी फर्म, तो दैट इज व्हाट आई कैन से. गौरव जैन कह रहे हैं कैन यू पुट सम लाइट ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग, व्हाट टाइम ऑफ वर्क इज डन देयर? गौरव जी कल आप आइए सपरिवार, विल कवर इट आउट टुमारो, है ना. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए यू कैन चेक माय यूट्यूब प्लेलिस्ट, प्लस यू कैन चेक एफएमवी और फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स व्हिच इज देयर ऑन माय वेबसाइट. इट इज गोना बी हेल्पिंग यू. I have prepared a very specific course on financial modeling, which is more from the CA perspective, so that you can do it out in a very nice way. Auditing और accounting प्रोफाइल स्विच करने के लिए कुछ एडवाइस करो. ऑडिटिंग टू अकाउंटिंग प्रोफाइल कुछ नहीं बेटा, ऑडिटिंग में चालू करो, देन यू कैन स्विच टू फाइनेंस और एनी अदर डोमेन, ठीक है. FP again we'll discuss FP के लिए मास्टर क्लासेस, just go and scroll the website, you'll get an answer for most of the questions which are there. So few intermediate friends who have not cleared inter are trying to find a job based on a BCom degree. Will your course help them to upskill? Master classes can help them out to upskill themselves in that domain, because master class में पूरा technical content है where we have taught the things from zero, right, based on a dummy data. So that is what you have tried to cover there. सर एज अ सेमी क्वालिफाइड ट्रांसफर प्राइसिंग में जॉब मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है, राइट, यू कैन गेट इट आउट देयर, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. Which domain should prefer possesses a technical skills for a stock analysis or option trading? राइट, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ्यूचर फर्स्ट, पार्थ पार्थ पटेल, फ्यूचर फर्स्ट जाइए. और देर आर वन मोर फॉर्म विच वाज देयर लास्ट टाइम विच एक्सेला. ये दो फॉर्म में आप ट्राई करो, राइट, जो आपको टेक्निकल स्किल्स और इसमें आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है. ट्रेजरी का सच कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता भाई, बट अगेन यू कैन बिल्ड आउट एन एक्सपर्टीज इनटू दैट. टीपी का सिमुलेशन नहीं होगा बेटा, सिमुलेशन इज मोर फ्रॉम द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग विच माइट हेल्प यू इन फाइनेंस, एफपीएनए, कंसल्टिंग एंड बिट ऑफ आईबी, which will be doing in our GR batch. ठीक है सर, आखिर एक दिन के आर्टिकल स्टाइपेंड की बात है, 500 रुपए, सब ग्रीडी हो गए हैं नालायक. डाउट लिखने वाले क्या लिख रहे हैं? आई वॉन्ट टू डू LLB इन फ्यूचर, विच डोमेन इज गुड? टैक्सेशन साइड यू कैन गो, वहां पे आपको थोड़ा इजी एग्जिट मिलेगा. सर will it be easy to shift from internal auditing to wealth management if I've done industrial training in internal audit? कर सकते हो, right, but again थोड़ा सा CV should be good enough in that domain. Can I get a job in IB if I've done articleship from mid-size firm? Lot of my students have got it, but front end IB tough रहता है, back मतलब mid office और back office तो something which you will get initially. फ्रंट ऑफिस एकदम से बहुत मुश्किल रहता है यार, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सीवी चाहिए एंड वेरी गुड टेक्निकल स्किल which is there, plus some good references. ठीक है, बुटीक फॉर्म में मिल सकता है, दैट यू कैन ट्राई फॉर. So from start audit, can I move to financial modeling, valuation, certification? कर सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा सीवी वैसा बनाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा. सेमी क्वालिफाइड सीए को एफडीडी फॉरेंसिक जैसे डोमेन मिलते हैं क्या? सेमी क्वालिफाइड में एफडीडी नहीं, देखो जैसे एफडीडी में हैव यू एवर हर्ड क्या आर्टिकलशिप हो रही है,
किसी ने सुना है कि एफडीडी आर्टिकल से पूरी? नहीं सुना है भाई, बिग फोर में भी नहीं लेते, वेरी वेरी रेयरली, सिर्फ वीडियो लेता है। राइट, छो में सिर्फ एक लेता है, वो भी वीडियो। बाकी केपीएमजी, ईवाई, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी कोई नहीं लेता भाई। तो वेरी रेयरली सेमी क्वालिफाइड को लिया जाएगा, बिकॉज एफडीडी इज वेरी डिफरेंट गेम, विच विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है। सेमी क्वालिफाइड सीएस के लिए आई एम थिंकिंग आई अपलोड वन वीडियो टुमारो, राइट, which you can tomorrow, day after, in upcoming days, so that might help you out in a very nice way which you can use it. कोई नालायक ने तो हद कर दी, वो कह रहा है कोलकाता के लिए बेस्ट डोमेन फॉर अपॉर्चुनिटीज। धन्य है आपका, आपको एक नारियल और एक अगरबत्ती चढ़ाने का मन हो रहा है। आपके घर के आसपास देंगे कोई मंदिर वंदिर होगा या कुछ होगा, उधर नारियल और अगरबत्ती मिलती होगी। नालायक, डोमेन लोकेशन पे डिसाइड करोगे। मैं करियर करियर की बात कर रहा हूँ, तो ये पूछ रहा है भैया कोलकाता में कौन सा अच्छा डोमेन है, ये बताइए। हे भगवान। राइट। राइट, चलो ग्रेट। हद हो गई ये तो। चलो ठीक है। चलो ग्रेट गाइस, यूट्यूब की जनता को बाय बाय, जूम की जनता रुकेगी, राइट, जूम की जनता को हमको विनर ढूंढ के भेजना है, तो दैट इज व्हाट।